मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल टास्क फोर्स और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उन्होंने प्रपोज किए हैं कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए SC/ST एक्ट 1989 के अंदर। ये SC/ST एक्ट जो है इनैक्ट किया गया था ताकि एट्रोसिटीज़ जो हैं अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ SCs और ST कम्युनिटीज़ उनको रोका जा सके, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन हो सके विक्टिम्स की, और मैकेनिज़म्स बनाए जा सके जो इन ऑफेंसेस से डील करें। ये एक्ट जो है 1990 में इन्फोर्स हुआ और इसको 2015 और 18 में फिर अमेंडमेंट्स भी किए गए और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। ये एक्ट जो है वो कुछ ऐसे ये जो एक्ट जो है कुछ ऐसे एक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनको हम एट्रोसिटीज़ मानते हैं अगेंस्ट SC/ST पीपल। तो इसमें जो है इन ऑफेंसेस हो सकते हैं जैसे फिजिकल वायलेंस, ह्यूमिलिएशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पोजेशन फ्रॉम लैंड या इंटरफेरेंस विद राइट्स एंड डिग्निटी। अब इसके अंदर स्पेशल और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इन केसेस को कंडक्ट करेंगे। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन होगा विक्टिम्स के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स कैसे होगा। लॉ जो है इसलिए क्रिमिनल जस्टिस, विक्टिम कंपनसेशन और प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन को कंबाइन कर रहा है। 2015 में जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैं उसको अमेंड करके और बढ़ा दिया गया था। 2018 में जब वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे SC/ST कम्युनिटीज़ के एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, जिसमें कि सेफगार्ड्स लाए जा रहे थे अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ दिस एक्ट, तो जो है अमेंडमेंट की गई और कहा कि कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड जो है इस एक्ट के अंदर, उसके लिए कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल भी जो है ऑर्डिनरी अवेलेबल नहीं होगी केसेस में अंडर दिस एक्ट। अब वन ऑफ द मेजर प्रपोजल्स जो हैं इंटरनल टास्क फोर्स द्वारा, उसमें कहा गया है कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन अमाउंट जो इसमें प्रोवाइड की जाती है विक्टिम्स को, उसको बढ़ाया जाए क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी है, ठीक है, और 1990 से बढ़ाई नहीं गई है। अब 2016 में ये अमाउंट जो रिवाइज़ हुई थी, इसको दोबारा से 10 साल बाद मतलब रिवाइज़ करने को कहा जा रहा है। और कहा गया है कि काउंसलिंग मैकेनिज़म्स बनाए जाएँ विक्टिम्स के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए, अक्यूज पर्सनस के लिए। और FIRs और चार्ज शीट्स जो हैं वो कंसर्न गवर्नमेंट को ऑफिशियल्स को विदिन 24 आवर्स फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। NC/ST ने क्या प्रपोजल रखा है? उन्होंने सजेशन दिए हैं कुछ इसमें अमेंडमेंट्स के। कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स होनी चाहिए ST कम्युनिटीज़ की जिनके लैंड जो है ले लिया जाता है। और उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंटर FIRs को रोका जाना चाहिए, खासकर जो है एट्रोसिटी केसेस जो रिपोर्ट करते हैं उनके अगेंस्ट। फिर ये केसेस जो हैं एडिशनल प्रेशर लेकर आते हैं विक्टिम्स के ऊपर और डिस्करेज करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस की, इसलिए इन केसेस को जो है वो रोकना चाहिए काउंटर FIRs को, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ स्कॉलरशिप डिलेज़ के ऊपर भी देखा है। उन्होंने कहा है कि डिले हो रही है डिस्पर्सल ऑफ स्कॉलरशिप्स में। स्कॉलरशिप फंड्स तो कई बार अगले एकेडमिक ईयर में जाके दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री को कहा गया है कि जो 8 लाख की एनुअल फैमिली इनकम का जो सीलिंग है फ्री कोचिंग स्कीम के लिए स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC OBC कम्युनिटीज़, उसको भी रिवाइज़ किया जाए। अब पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट किया है कि जो स्पेशल पुलिस स्टेशंस बनाए जाने का प्रोविजन है इसमें, वो सिर्फ 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने अभी तक एस्टैब्लिश किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने प्रपोजल सबमिट कर दिया है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को, जिसमें एनहेंस बजटरी सपोर्ट मिलेगा स्ट्रेंथन करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो एक तरह से डेवलपमेंट्स हाईलाइट कर रही हैं इफेक्टिव सोशल लेजिस्लेशन को ज़्यादा स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी प्रोविजन से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ ग्रोइंग LPG डिपेंडेंस ऑन US। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने रिवील किया है कि 67% जो इंडिया की LPG है वो अब US से आती है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट LPG इंपोर्टर है और लगभग 60% अपनी कंजम्पशन के लिए वो अभी तक जो है इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। उसमें से भी 90% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती थी। तो जब इस स्ट्रेट में डिसरप्शंस हुई तो इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इंडिया जो है US की तरफ टर्न हुआ और एक लॉन्ग टर्म डील कर ली 2.2 मिलियन टन्स की LPG की 2026 के लिए। US के इंपोर्ट्स जो हैं वो 0.77 मिलियन मैट्रिक टन सिर्फ जून में ही पहुंच गए। अब जो वेस्ट एशिया के से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना एक प्रूडेंट क्राइसिस रिस्पांस था, लेकिन ओवर डिपेंडेंस एक सिंगल सोर्स पर रखना ये सही नहीं है। और ख़ासकर ऐसी कंट्री जिसके ऊपर हमने देखा है कि वो एनर्जी को अपना फॉरेन पॉलिसी टूल मानती है। US ने ऐसे पहले फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए बहुत सी अदर कंट्रीज़ पे, जैसे ईरान, रशिया और वेनेजुएला। और जो US है वो थर्ड कंट्री ट्रांजैक्शंस का भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो अनलाइक वेस्ट एशियन सप्लाईज जो कि लॉन्ग टर्म सेल और परचेज एग्रीमेंट से गाइडेड होती हैं,
यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट्स जो है वो अपने शिफ्टिंग ट्रेड और पॉलिटिकल एजेंडाज के बेसिस पर चलते हैं। तो गल्फ से जो है शिपमेंट्स आने में सिर्फ 5 से 10 दिन लगते हैं, जबकि यूएस से आने में 25 से 35 दिन लगते हैं। यूएस एलपीजी जो है वो चीपर तो होती है एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वेस्ट एशियन एलपीजी चीपर होती है ऑन अराइवल। गल्फ बेंचमार्क प्राइसेस भी जो है वो लगभग 46% बढ़े हैं फरवरी और जून 2026 के बीच में। अब एलपीजी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है। इनफैक्ट कोई जरी सी भी शॉर्टेज इसमें हो जाए तो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है क्राइसिस के टाइम पर कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जाए रादर दैन कॉस्ट पर फोकस किया जाए। अब इंडिया जो है उसने अपना एक्सपोजर कम तो कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क के बाद, लेकिन बाकी की वल्नरेबिलिटीज़ को हम जो है वो ओपन हो चुके हैं। जैसे कमोडिटी के प्राइस के स्विंग हो सकते हैं, डॉलर की फ्लक्चुएशंस या फ्रेट कॉस्ट बढ़ सकती हैं। यूएस में अगर इन्फ्लेशन हाई रही तो फेडरल रिजर्व जो है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हाई रखेगा, जिससे डॉलर स्ट्रेंथन होगा और रुपी जो है वो वीक होगा, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेड कार्गो है वो महंगा होता जाएगा। और डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस हम कब तक लो रखेंगे आर्टिफिशियली? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो अंडर रिकवरीज ऑलरेडी फेस कर रही हैं, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि जुलाई के तक का जो आंकड़ा अगर हम देखें तो 59,000 करोड़ का जो है वो अंडर रिकवरीज है पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अभी तक। अब इंडिया की जो एलपीजी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। 2015 से लेकर 2026 के बीच में देखें तो 7.5% से ऊपर की ग्रोथ है। रिफाइनरीज को जब क्राइसिस हुआ तो कहा गया कि जो उनकी कैपेसिटी 34,000 टन की थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 55,000 टन तक की जो है अपनी आउटपुट कर दी थी। अब इंडिया को जो है वो वेस्ट एशिया और यूएस दोनों से ही डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया एक इसमें इम्पॉर्टेंट केस आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्जेंटीना, नाइजीरिया, अंगोला, ये कुछ एडिशनल स्ट्रेटजिक एजिलिटी हमको ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है शिपिंग कंटेनर्स की स्ट्रेंथन हो सके। ये एक टारगेटेड इनिशिएटिव स्कीम है ताकि हम कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के थ्रू एस्टैब्लिश कर सकें। ये सपोर्ट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। ये एम करता है एनहेंस करना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की ग्रोइंग डिमांड फॉर शिपिंग कंटेनर्स को मीट करने के लिए। ये इनिशिएटिव टारगेट करता है एनुअल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 10 टाइम्स एग्जिस्टिंग कंटेनर प्रोडक्शन। 10,000 करोड़ के 5 साल के लिए इसका बजट रखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नव्या प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने लोकसभा को नव्या प्रोग्राम के बारे में बताया है, जो 2025 में लॉन्च किया गया था। एडोलेसेंट गर्ल्स जो 16 से 18 एज की हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको रेलिवेंट सोशो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने के लिए स्किल्स दिए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जॉइंट इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें एम्पावर किया जाएगा ट्रेंड कैंडिडेट्स को कि वो डाइवर्स करियर पाथवेज को जो है वो अचीव कर सके। एक रॉबस्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क इसके लिए भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, 751 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कवर्ड है। तो ये एक सेंट्रली फंडेड हेल्थ स्कीम है जो 2016 में रोल आउट की गई। ये इसमें डायलिसिस सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशरीज़ को और नॉन बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स को सब्सिडाइज रेट्स पर दी जाती हैं। गवर्नमेंट जो है वो हेमोडायलिसिस सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रिकमेंड कर रही थी शुरुआत में, और लोकल रिक्वायरमेंट्स के बाद स्टेट्स को इनकरेज किया गया है कि वो फैसिलिटीज़ को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है तालुका लेवल पर भी लेकर जाएँ। अब इस स्कीम के अंदर जो है डायलिसिस सेंटर्स जो है वो एज़ पर द स्टेट और यूटी के रिक्वायरमेंट जो है वो लगवाए जाएंगे। ठीक है, जो इसमें नेशनल हेल्थ मिशन है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्टेट्स और यूटीज़ को इन डायलिसिस सेंटर्स को एस्टैब्लिश और ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संगीत नाटक अकेडमी। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप्स और अवार्ड्स देने वाले हैं 2024 और 25 के लिए 115 आर्टिस्ट को। तो ये संगीत नाटक अकेडमी क्या है? इंडिया की नेशनल अकेडमी है म्यूज़िक, डांस और ड्रामा की। इंडिया की पहली नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स है जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की 1952 में। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। अब ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ, आर्ट अकेडमीज़ के साथ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। सब्सिडाइज करती है वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस
ग्रांट्स देती है, ऑर्गेनाइज करती है, सब्सिडाइज करती है सेमिनार्स को, और ये हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन जो है वो संगीत नेशनल अकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट को मिलते हैं। अब अकेडमी का जो है आर्काइव जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है कंट्री में। जो चेयरपर्सन होते हैं अकेडमी के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Prevention of Atrocities Act 1989. This topic is important for your social issues. A central task force and the National Commission for Scheduled Tribes have proposed changes to strengthen the implementation of SC/ST Atrocities Act of 1989. This act was enacted to prevent atrocities against members of SC/ST communities, provide relief and rehabilitation to them, and establish mechanisms for dealing with such offences. This act came into force in 1990 and was subsequently strengthened through amendments, particularly in 2015 and 18. The Act identifies a range of acts which constitute atrocities when committed against SC/ST persons. These include offences which involve physical violence, humiliation, social discrimination, dispossession from land, and interference with rights and dignity. It also provides for special and exclusive special courts, special public prosecutors, relief and rehabilitation for victims and their dependents. The law therefore combines criminal justice, victim compensation, and preventive administrations. The 2015 amendments expanded the list of offences, and the 2018 amendment was made after the Supreme Court judgment brought some safeguards against misuse of this act. So there were widespread protests by SC/ST communities, and therefore the government brought an amendment saying that there will be no prior approval required for the arrest of a person accused under this act, and anticipatory bail will not be ordinarily available in cases under this act. So an internal task force headed by Secretary of Ministry of Social Justice and Empowerment has proposed that there is a need to increase the relief and rehabilitation amounts provided to the victims and their dependents to account for inflation. The last time it was revised in 2016, and it has proposed establishing special relief and rehabilitation cells in states and union territories to strengthen implementation. The proposed amendments also include counseling mechanisms for victims, their dependents, and accused persons. Another recommendation is that FIRs and charge sheets should be forwarded to the concerned government officials within 24 hours. Separately, the National Commission for Scheduled Tribes has suggested amendments to the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. A key concern is the protection of livelihoods of scheduled tribe communities. NCST has also called for measures to prevent the registration of counter FIRs against individuals who report atrocity cases. Such cases can place additional pressure on victims and discourage reporting of offences. Okay. So, similarly, a parliamentary panel on scholarship delays has also made some recommendations. This has been highlighted by this parliamentary standing committee on social justice and empowerment. One of the major concerns by this committee was regarding the delay in disbursal of scholarships. The committee had earlier found that scholarship funds were sometimes released only in the next academic year, and ministry should consider revising the 8 lakh annual family income ceiling for its free coaching scheme for students belonging to SC and OBC communities. Parliamentary committee also highlighted the inadequate establishment of special police stations. It has noted that only 7 states and UTs have established such special police stations until now. Government informed the committee that it had submitted a proposal to the Expenditure Finance Committee seeking enhanced budgetary support for strengthening implementation. The developments also highlight that effective social justice legislation requires more than just strong statutory provisions. So the next topic is India's growing LPG dependence on the US. This topic is important for our economy section. Union Minister for Petroleum and Natural Gas has revealed that 67% of India's LPG import now comes from US. So India is the world's second largest LPG importer, relying on imports for almost 60% of its needs, and about 90% of it traditionally passed through the Strait of Hormuz. When the strait faced disruptions this year, to manage this crisis, India turned to the US, and it was backed by a long-term deal for 2.2 million tons for 2026, signed by state-run oil refiners. US imports rose to 0.77 million metric tons in June month alone. Okay, so why over-reliance on the US is risky? Because this country has a history of using energy as a foreign policy tool. US has previously used financial sanctions, export controls, and technology restrictions against countries like Iran, Russia, and Venezuela. Washington also influences third country transactions. Okay, so that also becomes a risk. Unlike West Asian supplies,
which are largely governed by long-term sale and purchase agreements, US energy exports are more exposed to shifting trade and political agendas. Okay, geography also matters in LPG trade. Shipments from Gulf typically take just 5 to 10 days, while US shipment takes about 25 to 35 days. US LPG can be cheaper at the point of production, but West Asian LPG is usually cheaper on arrival. So even Gulf benchmark prices surged nearly 46% between February and June 2026. And why cooking gas is a political fuel? Because LPG is not just a commodity but a politically sensitive one for India. A government's priority during the crisis was ensuring availability rather than optimizing costs. So India may have reduced its exposure to Strait of Hormuz risk, but it has opened itself to new vulnerabilities like commodity price swings, dollar fluctuations, and freight costs. If US inflation stays high, the Federal Reserve may keep interest rates elevated, strengthening the dollar and raising the rupee cost of each imported cargo. If domestic LPG prices are kept artificially low, then oil marketing companies would face under recoveries. The government has also already informed Parliament that accumulated under recoveries of public sector market companies across 59,000 crore. India's LPG demand continues to outpace domestic supply, and we have about a compound annual growth rate of 7.6% between 2015 and 26 for LPG. And in response to the crisis, refineries were directed to maximize LPG output, and daily production was ramped from 34,000 tons to 55,000 tons at the peak of disruption. So, what is the way forward here? Experts suggest that India should look beyond both West Asia and the US for diversification. Australia offers strategic advantages. Apart from that, of course, Argentina, Nigeria, and Angola could offer a certain additional strategic agility. Okay. So the next topic is Container Manufacturing Assistance Scheme. This topic is important for your economy section. Government has proposed a 10,000 crore Container Manufacturing Assistance Scheme to strengthen domestic production of shipping containers. So Container Manufacturing Assistance Scheme is a targeted initiative to establish a competitive domestic container manufacturing industry through financial and institutional support. It supports establishment of new manufacturing facilities and expansion of existing units. It also aims to enhance manufacturing capacity to meet India's growing demand for shipping containers. The initiative targets an annual domestic manufacturing capacity of around 10 times from the existing container production, and the financial outlay for this scheme is 10,000 crore for over 5 years. So the next topic is Navya program. This topic is important for your governance section. Ministry of State for Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has informed Lok Sabha about the Navya program, which was launched in 2025 to empower adolescent girls aged 16 to 18 years in aspirational districts by equipping them with relevant skills for socio-economic independence. So it's a joint initiative of Ministry of Skill Development and Ministry of Women and Child Development. It is being implemented under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. It focuses on empowering trained candidates to pursue diverse career pathways, and it will be having a robust monitoring framework also under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So the next topic is Pradhan Mantri National Dialysis Program. This topic is important for your social issues. Pradhan Mantri National Dialysis Program is presently being implemented in all 36 states and union territories, covering about 751 districts. So it's a centrally funded health scheme which was rolled out in 2016 to strengthen the district hospitals under the National Health Mission. So under this scheme, dialysis services are provided free of cost to all BPL beneficiaries and at subsidized rate to non-BPL patients. Initially, the government recommended the setting up of hemodialysis centers in all district hospitals, but the states encouraged to scale down the facilities to the community health centers level at the taluka level. So this now supports the establishment of dialysis centers as per the state or UT requirement, and NHM provides financial assistance to states and UTs for establishing and operating these dialysis centers. So the next topic is Sangeet Natak Academy. This topic is important for our art and culture section. President Draupadi Murmu will be conferring the Sangeet Natak Academy fellowships and awards for 2024 and 25 on 115 artists soon. And what is Sangeet Natak Academy? It is India's National Academy for Music, Dance and Drama. It is the first National Academy for Arts set up by the Republic of India in 1952. It is an autonomous body of Ministry of Culture. It functions as the Academy functions as the apex body for performing arts. It also works with governments and art academies in states and union territories of the country.
So it subsidizes the work of institutions, gives grants to aid research, documentation, publishing in the performing arts, organizes and subsidizes seminars and conferences of the subject specialists. This Sangeet Natak Academy Awards are the highest national recognition conferred on practicing artists. So Academy's archive is one of the largest in the country, and it is extensively drawn upon for research in the performing arts. The chairman of the academy is appointed by the president of India for a term of 5 years. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.